Happy Diwali, family. I am super happy and charged. But monkey mind, you see, it brings a lot of doubts and questions. And then we need advice. So I go to advice to different people, right from my school days. Which stream should I choose? Which college? Should I go to job or do my post graduation? And job or a business? Love marriage or an arranged marriage? One kid or three kids? Or we two, ours too? Everywhere there are questions and we seek for advice. So, is right advice the best advice for me, even from the expert? Let's check from this expert, who is an emotions redesigner. Welcome, Shivani Agarwal. Thank you so much, Sunny. Happy Diwali to everyone. Happy Diwali to you. As you asked this question and in the end you said कि हमें एक बच्चा करना है, दो बच्चे करने हैं. कभी कभी ये भी एडवाइस लेने हम लोगों के पास चले जाते हैं कि भी क्या करना चाहिए. एंड ऑफन पीपल से कि यार दो बच्चे होने चाहिए विच इवन आई से दैट एक सिबलिंग बॉन्डिंग बनती है ग्रोइंग ईयर्स में. जब एक घर में दो बच्चे होते हैं तो ज़्यादा एक दूसरे से सीखते हैं एंड इन द लॉन्ग टर्म दे हैव समबडी टू लुक अप टू, राइट. बट देन ये एडवाइस तो मिल गई, बट आई हैव टू सी माई ओन हाउस ऑल्सो एंड आई हैव टू सी माई ओन पार्टनरशिप विद माई पार्टनर, हाउ वी सी दिस थिंग. अब बाहर वाले ने एडवाइस कर दिया बट देन वी हैव टू सी कि वो हमारे ऊपर अप्लाई होता है कि नहीं होता है. ब्लाइंडली हम कभी कभी एडवाइस फॉलो कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल इन हाउस होल्ड्स इन लॉज के साथ हमारे इश्यूज होते हैं एंड वी ऑफन शेयर इट विद आवर फ्रेंड्स, राइट, एंड फैमिली, जहाँ पे हम बोलेंगे अरे ये हुआ या ऐसा हो गया आज घर पे. तो यूजुअली आगे से क्या रिस्पॉन्स आता है? मेजॉरिटी केसेस में अगर पेरेंट्स होते हैं तो वो बोलेंगे कि इग्नोर करो, इट्स ओके, घर घर की बात है, चलो इग्नोर करो. कुछ फ्रेंड्स आपको बोलेंगी कि हाँ यार ये तेरे साथ हुआ, मेरे साथ भी हुआ, अब देखना ये तेरे साथ आगे ये होगा. इसके पीछे उनका माइंडसेट ये था क्योंकि उन्होंने ये एक्सपीरियंस कर लिया, राइट. बट उन्होंने ये एक्सपीरियंस कर लिया, अब आपके माइंड में डाल दिया कि ये सिचुएशन आगे ऐसे होगी. आपने जाने अनजाने एक सबकॉन्शियस माइंड में अब एक एडवाइस ले ली जो शायद आपके सेटअप में एप्लीकेबल नहीं हो. आपके सेटअप में कोई एक सिचुएशन आज हुई, शायद वो एंड ऑफ दैट सिचुएशन हो, बट बिकॉज नाउ सम आपने किसी से एडवाइस ली या किसी से शेयर किया, सामने वाले से ने आपको एडवाइस चाहिए भी नहीं थी तब भी उसने दे दी, आपने अपने माइंड में डाल लिया एंड नाउ योर माइंड विल स्टार्ट रिपीटिंग दैट रील. दिस माइट हैपन, देख उसने बोला था ना, उसने कहा था ना. तो वो हमारे चलती जाएगी माइंड में एंड समवेयर वी माइट मैनिफेस्ट दैट. और हम क्या सोचेंगे, जो एडवाइस देने वाला था यार वो मुझे गलत एडवाइस कैसे दे सकता है, दैट पर्सन इज माई फ्रेंड, दैट पर्सन इज माई फैमिली. एंड उस सामने वाले इंसान की भी इंटेंशंस गलत नहीं है, दे ऑल्सो वॉन्ट गुड फॉर यू. नाउ यू हैव टू सी इन दैट गुडनेस राइट एडवाइस है कि नहीं आपके लिए. गुड पर्सन से आ रही है बट देन देयर इज अ डिफरेंस दैट गुड एडवाइस मे बी गुड और मे नॉट बी गुड फॉर यू. So you always have to figure out when you look for advice outside, you have to come back and then you have to reflect on that advice whether it is applicable on in your situation or not, and not blindly follow that advice because it has come out from somebody who has been into that situation. I often see, budding students who want to crack competitive exams और टॉप उनमें जाना चाहते हैं. दे विल सी कि जिन्होंने क्रैक कर लिया है हम उनकी जर्नी देखें. डेफिनेटली learn from them, learn from their mistakes, do take their advice, but come back and reflect कि उनकी कितनी एडवाइस उनकी लाइफ में एप्लीकेबल है. नॉट बिकॉज उन्होंने वो क्रैक कर लिया है उनकी हर एडवाइस ही सही होगी.
So, always, whenever even you take advices from good people in your life, you need to reflect on those advices before implementing them. So, every True. advice may not be the right advice for you. It may be a good advice, but might not be the right advice for you. So it is okay to take advice, but then reflection, reflection, reflection. Absolutely. Introspect, introspect, introspect. We see the world as we are. So when I advise, I am advising according to my limited perception, my limited experience, and which was okay for me, not for everyone. That's why Yes. in SMART goals, it is relevance. Is it relevant for me? Is it applicable for me? I know because I'm into genetic brain profiling. So even Abdul Kalam ji had guided one child become a scientist, serve India. He's a great patriot, right? But that boy failed. When he came to us, he realized he's a good teacher. So he became a science teacher. So it is fine. We are all learning. Let us think well before taking any advice. सुनो मन की, सुनो सबकी, करो अपने Karo दिल man. की. So important. Absolutely. And it is spiritual also, that I need to reflect. I need to be aware. Yes. Super duper thoughts, Shivani. Thank you so much. And if you had to summarize everything in one line, what is your reflection? वो आपने कर दी, सुनो सबकी, करो अपनी मन की, बट रिफ्लेक्ट अपनी मन के करने से भी पहले एक रिफ्लेक्ट करो। बिकॉज जब आप रिफ्लेक्ट करते हो अपने आप में चाहते हो, तो जब आप ये रिफ्लेक्शन में बैठते हो, यू अनकवर लॉट ऑफ लेयर्स ऑफ योर पोटेंशियल एंड कैपेबिलिटीज ऑफ योर इंटरेस्ट एज वेल। जब आपका मन में आ गया कि आपको ये करना है, आस्क योर सेल्फ वाई यू वॉन्ट टू डू इट। So, this why of your life is very important, and asking the right whys. So, that when हाँ you नहीं sit in तो that reflection mode, नहीं तो इजीली मैं ब्लेम कर दूंगा, उन्होंने कहा था, चाचा जी ने कहा था, मामा जी ने कहा था, मम्मी के कारण बिल्कुल हुआ है, पापा के कारण हुआ है. Law of choices is a blessing only when we have law of responsibility. Yes, absolutely. I need to take charge. I am responsible. And I need not be fearful of ups and downs, success and failure. Let me take Actually, response. Yeah. as you said, we lack ownership of our own decisions and our own thoughts. हम ढूंढते रहते हैं कि ये अब इसका रिजल्ट ऐसे आ गया ना, तो किसी ना किसी पे ब्लेम डाल दो, अरे तुमने बोला था तो मैंने तो कर लिया। उसने बोला था, उसने ये थोड़ी ना बोला कि आप करो ही करो, वो आपको देखना था कि वो आपको करना है कि नहीं करना। So ownership is very much required. And ownership comes when you have right reflection with yourself, when you spend time with yourself and ask yourself right questions. Beautiful tips. Time with self, self love, and self responsibility. Thank you Yes. so much, Shivani. Happy Diwali once again to you and your family. Thank you so much, Sunny.